Skand was Shivji's first son's name. It means to give support to someone. Fortunately, what has happened, every project that I have been a part of, the makers are as hungry as I am. Article 370, that was my first film. वो वैनिटी से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद डे एंड तक उनके हाथ पे आपको स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी. Never holds a script. Never. No matter how long the scene is. 25, 26, 27 साल का बेटा घर पे हो और सुबह शाम माँ बाप देख रहे हो कि घर पे ही बैठा है और बाकी सारे दोस्तों की तो जॉब लग गई है, तो वो एक मेंटल प्रेशर आई थिंक मैंने फेस किया है. सो हेलो एवरीवन, आज हमारी पॉडकास्ट में है स्कंद. बड़ा यूनिक नाम है इनका. एक अच्छे एक्टर हैं और आई थिंक उभरते सितारे हैं जिनको मैं कह सकता हूं. पर इनके जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाई वी थॉट एट हिटफ्लिक he'll work in a interesting ways, because I saw this unconventional series called Khalbali Records. एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई जहां बहुत ज्यादा कुछ प्रमोशन होती नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा दिख गया, बट the content was so good that it shown things just came out on their own. म्यूजिक की बात करें या उसका जो सब्जेक्ट है या म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में है, और उसमें एक गुड लुकिंग सा लड़का था. पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार ये किसका बेटा है जो इसको इसके कास्ट कर दिया गया है, कि ये किस सनी देओल का बेटा है, किसका है, कि व्हाई डिड ही गेट दैट रोल. एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट मोर. सो कुछ ज्यादा पता नहीं चला तो आज पता कर लेते हैं. So Skand, just introduce yourself a little bit about what all you've done, what have you this thing. First of all, thank you for such a great introduction. I don't think I've got that in the last 4-5 days. But my name is Skand Thakur. I was born in Himachal. What does Skand mean? Skand was Shivji's first son's name. Okay. कार्तिक, जिनको हम कार्तिक के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम पुरानों में स्कंद भी है. It means to give support to someone. Okay. अपना कंधा नहीं. तो डायरेक्टर वाला काम है. थोड़ा बहुत. But I was born in Himachal. Mom dad got me to Bombay when I was 9 months. I've been here ever since. So pretty much a Mumbai boy. 2015-16 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. And my turnaround in my acting career was my first short film that I did with Joydeep Sarkar for Netflix with Tanya Maniktala, which was in 2021 it released. वहाँ से चीज़ें चेंज हुई हैं. उसके बाद एक फिल्म की जिसका नाम है Article 370. That was my first film. And now there's Khalbali Records on Jio Cinema, which I actually shot before 370, but it came out after 370. So far the journey is this. So as an actor कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितना है? बिकॉज ये जो लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा आसानी से आ गया इसमें, बट उससे पहले जो ओवरनाइट सक्सेस से पहले जो सालों की मेहनत लगती है. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट. सर, मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊं तो बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ बॉम्बे में. सो आई हैड अ रूफ, आई हैड फूड टू ईट, आई वाज वेरी कंफर्टेबल व्हाइल आई वाज लुकिंग फॉर वर्क. अब उसका दूसरा पार्ट ये है कि जब 25, 26, 27 साल का बेटा घर पे हो और सुबह शाम माँ बाप देख रहे हो कि घर पे ही बैठा है और बाकी सारे दोस्तों की तो जॉब लग गई है, ये होता है, तो वो एक मेंटल प्रेशर आई थिंक मैंने फेस किया है. बहुत कम तो नहीं बोल सकता, बट फेस किया है. कुछ दिन तो होता है ना जब आप डैड सुबह कमरे से बाहर आ रहे हैं, ही इज लाइक अच्छा आज भी सिर्फ एक ही ऑडिशन, अच्छा वो पहले वाले का क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, बी पेशेंट. आई एम ब्लेस्ड विथ वंडरफुल पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया, बट वो खुद का एक रहता है. और स्ट्रगल इन द सेंस मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहा rather than difficult. It was very confusing. I had to do everything to know what is right and wrong. अच्छा काम भी किया, बुरा काम भी किया, एपिसोडिक शोज भी किए, कुछ यूट्यूब पे कर लिया. वो बहुत डिफिकल्ट था इन टर्म्स ऑफ हाउ कंफ्यूजिंग इट वाज, कि कोई बताने वाला नहीं था कि यार भाई ये नहीं करना होता, या इतने पैसे मिलते हैं एक ऐड करने के. ये जब मैंने एक बार कोई ऐड 5,000 रुपए के लिए कर ली, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा इसके 50 मिलने वाले थे, बट मैंने 5 में कर ली. There was no one to guide you, no one to tell you. So that was very confusing. I think that took away good 4-5 years of my life. कि production house क्या होता है. And this is just 10 years back. तो ऐसा भी नहीं है, but 10 years back भी the internet is so fast now. आप Google करो कि कौन सा
प्रोडक्शन हाउस, कास्टिंग वाले कौन है, ये वो. Even 10 years back, we used to land up at offices and wrong audition, wrong information. बोला ये कि फिल्म का ऑडिशन है, लेकिन किसी सीरियल के 2 दिन के ट्रैक का है ऑडिशन, और वो भी है कि नहीं पता नहीं. So in that terms it was very difficult in the terms of कि यार खुद पता करना पड़ेगा ये सब. यहाँ कोई बताने वाली है. Nor my parents were well equipped. They have nothing to do with this industry. तो वो तो और भी clueless थे. तो उस तरीके से difficult रहा है. Otherwise I have heard stories sir. मैं तो बहुत comfortable रहा हूँ इसमें. कोई Fair enough. मतलब ऐसा भी रहा होगा कि 3-3, 4-4 महीने 3-3, 4-4 ऑडिशन पर डे किए, पर कुछ कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा. So how do you maintain your mental balance? I think after a point, you become thick-skinned. Rejection becomes a part. यार यही है. Second, मुझसे पहले जो एक्टर्स आए हैं उनकी जर्नी के बारे में आप पढ़ लो तो लगता है कि अच्छा नहीं ठीक है यार, ऐसे ही होता है. You have to be patient. You have to keep doing your best. हाँ, अगर मैंने एक्टिंग शुरुआत करते ही अगर मुझे 4-5 साल के लिए कोई काम नहीं मिला होता तो मैं सर डेफिनेटली एक सेकंड थॉट मैं देता कि यार शायद मुझे नहीं आता, मे बी आई एम नॉट गुड. बट द पीपल हु वर्क बिफोर मी, दे आर एन इंस्पिरेशन. उनकी स्टोरीज, हाउ मेनी इयर्स डिड दे गिव, स्मॉल बिग पार्ट्स करके दे रीच देयर. सेकंड, यू बिकम थिक स्किन्ड. जब आपको ऑडिशन रूम के अंदर घुसते ही आपको बोल देंगे यार तू थोड़ा मोटा है, थोड़ा लंबा है, यंग दिख रहा है. इट इज सो लाइक थोड़ा ऑफ है ना. कोई मुंह पे बोलने की, सुनने की आदत नहीं है. बट फिर आप थिक स्किन्ड हो जाते हो कि यार ये ऐसे ही तो है, दिस इज आवर इंडस्ट्री. तो वो मुंह पे कमेंट करते हैं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है. नहीं, वो बोल देते हैं कि नहीं यार आप ना थोड़े बड़े हो इस ऑडिशन के लिए, या आप बहुत यार नहीं यार वी आर लुकिंग फॉर सम डिफरेंट एज ग्रुप. नो, एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ चबी गाय. यू आर नॉट चबी, और यू आर अ लिटिल चबी फॉर दिस पार्ट. वी आर लुकिंग फॉर अ लैंकी गाय. तो वो शुरू में तो बड़ा ये लगता था ना कि यार ये तो सीधा मुंह पे बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, लंबा हूँ, पतला हूँ. बट देन यू लर्न दैट दिस इज व्हाट दे नीड. तो मुंह पे नहीं बोलेंगे तो और क्या करेंगे. सो यू बिकम थिक स्किन्ड, एंड आई थिंक वी हैव हैड द फॉर्चून ऑफ सम एक्टर्स हु हैव गिवन अस इंस्पिरेशन. ओके, कि भाई होगा, अगर सच्चे मन से लगे रहोगे तो हो जाएगा. सो ये बड़ा अच्छा है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट जब एक्टर्स दूसरे एक्टर से ज्ञान लेते हैं तो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, बिकॉज द जर्नी वो तो मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत मुश्किल है. तो आई ऑलवेज सेल किया दूसरे से ज्ञान मत लो. नहीं, मैं उनसे सुनता नहीं हूँ, मैं उनको से दूर से देखता हूँ. ओके, कि इफ समवन लाइक विक्रांत मासी वो बोले या चाहे वो ना बोले, उनकी जर्नी तो दिखती है ना कि वो बिल्कुल कहाँ से कहाँ, और वो काबिले तारीफ है. यस, एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल. काफी मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं होगा, इफ ही कैन डू इट. The Khurana brothers, Ayushmann Khurana, Apash Khurana, both of them, they both are doing so good. Yes. तो वो बोले चाहे ना बोले, एक जर्नी तो सब दिखती है. Fair enough. So Article 370 कैसे हुआ? ऑडिशन था सर. Just another regular audition in my life, जिसको मैंने honestly बोलूं तो मैंने on record अब तक तो बोला नहीं है, लेकिन मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया. क्योंकि मेरे लिए था यार फिल्मों में कौन लेगा अभी. मैंने काम ही क्या किया है. मन में तो ये था ना कि यू हैव टू डू समथिंग, एटलीस्ट सम विजिबल वर्क फॉर द डायरेक्टर टू से कि यार नहीं व्हाट इज ही डन, लाइक वी आर गोइंग टू डू सच अ बिग फिल्म. आदित्य धर प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग हमारे डायरेक्टर हैं, यामी जी हैं, यामी गौतम हैं. तो आई वाज लाइक अच्छा चल ठीक है, ऑडिशन को तो ना बोलना पेट पे लात मारने जैसी बात है कि यार ये तो नहीं कर सकते. सो आई वेंट, जस्ट गिव एन ऑडिशन एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट. यार वो बोल रहे हैं पिवटल रोल है, यू आर देयर टिल द एंड in the film. I was like, अपने को कहाँ मिलेगा? I'm sure they'll take some known face. कि Section 370 के जीरो जो है वो आप ही हो. तो but हो गया sir. I think I got locked within 48 hours of auditioning because it was a very tight scheduled film. Okay. So it was just another audition, sir. Just another audition. So yeah, that gave me a lesson. When you start working on these things, you got some good actors working. Yeah. जो खलबली रिकॉर्ड्स में भी राम कपूर है या यामी गौतम है. So ऑ में आते हो आप कि यार ये है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा? How do you cope with that? एक thought तो जरूर आता है sir, obviously, because these guys have been around for so long and they are brilliant at what they do. So much experience that they have. तो उसके तो दो ही तरीके हैं sir. या तो you prepare yourself कि there is no scope of messing up. उसका तो चांस ही नहीं है. क्योंकि एक तो अगर आपने गड़बड़ की तो दूसरा चांस देने वाला तो कोई नहीं है. ये तो तुम्हें खुद मिला है तो खुद करना पड़ेगा. So in both the projects I was, yes, I can't say I was not nervous, and
not wondering how it's going to be entering that room. But मैं एक रात पहले I used to think कि no, this is your chance. You have to be on your toes. You're working with big names. You can't fumble. Fumble करने का time नहीं है अब. Be on your toes. याद रहनी पड़ेंगी. लाइनें याद रखो. Respectable रहो. Be open to learning because that's the best you can do around such people. Keep your ears and eyes and observe them. Even if they're not telling you something, आप observe तो करो कि वो क्या कर रहे हैं. But हाँ सर, अगर मैं थोड़ा बहुत 1-2 दिन तो रहा ही था. Yami मैम she's so beautiful and she's so hardworking. और वो एक अलग intimidating factor आ गया था. And Yami Gautam being where she is, she's toe to toe with us when the training was going on. In fact, she started her training 7 days before us. तो लग रहा था कि यार अभी ये कर रही है तो हमें तो एटलीस्ट वहां से तो थोड़ा आगे ही करना पड़ेगा एक बार. So yeah, there was a little, but that's how I prepared myself. Okay, you have to be there. And then Khalbali Records, ये कैसे हुआ? Again sir, audition. देवांशु सर ने Feels Like Ish देखी थी. और उन्होंने कास्टिंग वालों को बोला था कि I want to test this boy. Fortunately जब मैं ऑफिस गया ऑडिशन करने के लिए, देवांशु सर was there. तो I was lucky enough that I got the brief directly from him rather than coming from the casting. वो हो जाता ना, lost in transition. तो उन्होंने brief दिया. I had 7 rounds of auditions. After that, last 2 rounds being with hair, makeup, everything, pictures वगैरह. And yeah, happened. कितने पेज का ऑडिशन था? Sir वो and which part? It was the scene where I was pitching Khalbali Records to this character called Ninja. तो वो एक scene था. वो एक ही scene हमने 6-7 बार जो अलग अलग टेस्ट हुए थे वही किया था. और आई थिंक लास्ट में हमने एक सीन जो मेरा राम सर के साथ था वो किया. How was it working with Ram Kapoor? He's a very fun guy to work with. वो बहुत the again fortunate luck अच्छा हो तो ऐसे ही होता है that he kept the entire atmosphere so light on set that वो जो आप थोड़ा सा बोल रहे हो ना कि यार होता है ना कोई बड़ा आदमी सेट पे हो तो सेट पे एंटर होने से पहले I was like, no, I know my lines, I know the scene, I know the emotion, I'm gonna do a take and I'm gonna make sure that he knows that I am serious and I'm here to do something. But उन्होंने इतना लाइट रखा था तभी भी वो एक सीरियस सीन के पहले भी एक जोक मार देते थे. ज़्यादा हो जाता था. तो ऐसा लगता था कि चलो I was fine with that, but to have someone difficult, then I would have been थोड़ा मैं शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा हिचकिचाता 1-2 दिन. But he was very fun to work with and I learned something very interesting about him and I want to inculcate this going ahead. Please. वो वैनिटी से बाहर निकल जाते हैं. उसके बाद डे एंड तक उनके हाथ पे आपको स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी. अच्छा. चाहे वो सीन 10 पेज का हो, 50 पेज का हो या 1 पेज का हो, उनको अपनी लाइन है और आपकी लाइन है विद कॉमा फुल स्टॉप याद है. Wow. He never holds a script. Never, no matter how long the scene is. Once he's outside the vanity, you'll not see a script with him or around him. वो आपको भी याद दिला देगा. So this line you missed. You know, so I think that was really cool, and also shows the amount of hard work, confidence, and experience that he has. And I'll make sure that I try and inculcate that going ahead. कि बिल्कुल नहीं, never around him. Phone. His Apple Watch, and then heart take. So I guess that also happens when you have an army training of television, because television में इतना मतलब कई बार 10 पेज के स्क्रिप्ट्स होते हैं और आपको ना टेक का टाइम है ना कुछ है और आपको शूट करना है. So I guess TV not just trains you but it also corrupts you because it becomes a mechanical process. Yeah, I think you're right. I think that also played a big role in his entire line learning and yeah. But I also believe that he's still not got his due. The kind of caliber he has, he's capable of much more better, much more bigger this thing. You think so too? I'm trying to remember Jubilee. And then this. And then बड़े अच्छे लगते हैं. And then मेरे dad की मारुति. Yudra, he was there in Yudra. So yeah, could be. I think with the space that he has in his body and mind to do things. उड़ान is another character. Yeah. कि उड़ान की एक पोएट्री थी वो देवांशु ने लिखी थी, देवांशु सर ने. तो उनका पुराना कनेक्शन था. Okay. सेट पे भी वो डिस्कस कर रहे थे. तो ये डर आपको नहीं लगता कि यार मेरा पोटेंशियल पूरा यूज हो पाएगा नहीं पाएगा as you go along as an actor? Sir, fortunately what has happened, every project that I have been a part of,
the makers, I'm going to use a word that you were using, are as hungry as I am. Okay. Joydeep, Yeah. when I did Feels Like Ishq, it was his first long format. Okay. We had a 5-day workshop before the shoot, me and Tanya, by this very beautiful teacher called Sheena Khalid. Okay. She trained us for 5 days. When I went for 370, there was rigorous 15 to 20 days of physical training because that film was more physical. Yeah. Dialogues nahi the. Action bahut tha. When it came to Devanshu sir, Khalbali Records, again as hungry. It's his first show that he's doing, a big budget show. So मुझे लगा कि all 3 projects में they were with me. So they made sure कि तेरा जो best है हम निकालेंगे तो चल. Because Joydeep के साथ also I was leading that film. So he could not take it lightly. I could not take it lightly. Khalbali also, Nasser, 7 round auditions. He keeps telling in all the interviews that I did 7 rounds because he is my lead. I cannot take it lightly. मैं 2 audition में हाँ नहीं बोल सकता हूँ. I had to test him. So far it's been that way. Also, I'm seeing this thing going around. I'm sure you might know of this. कि अब हर फिल्म के और बड़े शो के पहले there are workshops happening. Actors are being It saves time, energy. And the other thing with workshop is कि अगर आप एक दूसरे को जानते हो तो स्कूल का जैसे प्रोजेक्ट होता है ना वो एक कंफर्ट आ जाता है कि यार मैं तो आगे बढ़ूं, दूसरा अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसे भी मैं उठा के साथ लेके तो वो कि मेरा पोटेंशियल पूरा यूज ना हो, वो धीरे धीरे ऐसा मुझे लगने लगा है कि एवरीवन इज पुटिंग इन एफर्ट नाउ. इट्स नॉट कि यार लॉक हो गए चलो कल आके फिल्म शूट करो. Everyone, all the directors are making sure कि no, we have to do readings. We have to have some kind of workshop. अगर physical है तो actor को time दो 2-3 महीना to transform, learn something, ये वो फलान इनका. तो I think so far I've given my 150%. इसके बाद ज़्यादा ही होगा. So that I'm not worried about. Fair enough. So you mentioned a trainer called Sheena Khalid. So what is the process of a trainer? What did she do? So what happened was this was feels like we were shooting right in the middle of COVID. Lockdown. तो तान्या दिल्ली में रहती है. Her base is not Mumbai. तो 4 days or 5 days before we started shooting, that was the amount of time that Tanya could spare for the workshops. So the only motive was that these two people who've never met in their lives, never even spoken to each other, now have to shoot a romantic film. Like the second half of the film goes a little romantic. So how are you going to make them feel comfortable? Okay. So being comfortable with each other's physical presence, being aware of each other's physical presence. This was also done because COVID time है. तो ज्यादा permissions नहीं थी. ज्यादा लोगों के साथ आप शूट नहीं कर सकते हो. लेकिन फिल्म तो बनानी है. तो उसको कैसे मैनेज करना? That even if just 2 of you in the room, you both have to be aware. And you have to give your best. So just making us feel comfortable with each other's presence. The more interesting part was that Joydeep was also doing it. Okay. He was also a part of this workshop. Okay. तो जो भी exercises करते थे हम, Joydeep भी करता था. So that we all 3 are in sync. Me and Tanya get comfortable. And we make a good film. So जो चीज हमने 10वीं क्लास या 9वीं क्लास में स्कूल में सीख ली वो आपके लिए ट्रेनर लाना पड़ा और वो सब करना पड़ा. Am I right? क्या? Camaraderie of getting to know a girl. 5 दिन से थोड़े ज्यादा होते तो सर मैं कर ही लेता खुद ही. Fair. But I guess camaraderie is extremely important because वक्त waste नहीं होता. And sometimes actor bounce ideas to other and if the other one catches it तो dialogues magical हो जाते हैं. But you're one of those actors जो थोड़ा restrained में perform करता है. Like, I've seen a lot of actors. Today's actors do that. So how difficult is doing less in terms of acting? You said you've seen me do less. No, I'm not saying doing less. It's like, there's one way जो गुलजार साहब कहते हैं कि मैं तुझे गोली से मार दूंगा बंदूक तान के. There is a way of, the older actors doing it. And now there's a Pankaj Tripathi. Who in my mind does less and that's why it's more effective. You have the same pattern is what I feel. That you're not making that effort to make sure that the dialogue is underlined. That's the new process of acting is what I feel. So, एक तो सर ये मैं ऐसा करता हूँ ये मुझे बताया गया है मुझे पता नहीं था. Because people एक तो even now when audition comes मैसेज आता है कि ये ऑडिशन नीचे ब्रीफ में हमेशा लिखा होता है कीप इट सटल. कीप इट सटल. ये तो चलो खैर मैं पढ़ ही रहा हूँ अब तक. बट दिस इज समथिंग आई हैव बीन टोल्ड दैट
You I have should been do. doing. हाँ. I have been doing. हाँ. Now Devanshu never. उनका तो मतलब वो बोलते बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे. हाँ. वो तो बहुत खुश होते थे. हाँ. कि नहीं डोंट. आज लाइक सर थोड़ा राम सर के साथ थोड़ा अग्रेसिव सीन है, एक बार कर लेते हैं. कर लिया. नहीं लाइक बस नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए. प्लीज चाहिए होगा मैं तुझे बता दूंगा, कर लेना. बट डोंट डू इट. सो like you said, people are. I think it's more relatable when you do it that way. Yeah. Normal लगता है. No, it does. Normal लगता है पर ये समझ आना है कि कम doing less is more. हाँ. थोड़ा टाइम लगता है sometimes. अभी वैसे ही हो रहा है सर. तो आई थिंक किसी ने बोला ही नहीं मुझे आज तक कि वो ज्यादा करो. अभी आपने पुलिस वाले का रोल नहीं किया ना. अगर आप पुलिस वाले का रोल करते हैं तो सबसे ज्यादा होता है अपने अंदर अमिताभ बच्चन आ जाता है. So you automatically start emoting the way he does, and then you have to tell me बच्चन निकाल. So that's the term, because you somehow, so I mean doing less is a great thing to do. So I just asking कि कैसे हुआ. I've been following that since. एक तो बोला भी जाता है कि नहीं ऐसे ही करो, इतना ही करो. Say it normally. Say it normally. So I'll tell you a very small story. Please. I started off doing theatre. So theatre में there's no mic, there's no nothing. You're on stage, you're performing, right? You're throwing your voice. Like I said, don't know what a set is. क्या होता है माइक पता ही नहीं है. तो एक एड के लिए सिलेक्ट हो गया एंड द शूट वाज इन बैंगलोर. महिंद्रा गस्टो की एड है. मेरी फर्स्ट टाइम सीइंग अ सेट, बीइंग ऑन अ सेट एंड एक्टिंग. नाउ माय डायरेक्टर इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस और वो आके माइक वाइक लगा के चले गए और मैं अपनी धुन की में, बिकॉज़ आई एम नर्वस, राइट? इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन सेट एंड इट्स माय एड, मेन गाय. एंड निखिल सर वाज द डायरेक्टर. सो ही इज लाइक, निखिल राव, लाइक बोलो एक्शन. एंड आई थ्रू माय वॉइस थिंकिंग कि मुझे डायरेक्टर को सुनानी है. एंड ही केम एंड ही इज लाइक, व्हाई आर यू येलिंग? आई एम लाइक, सर एम आई? बोला, यू रियलाइज यू हैव अ माइक हियर, राइट? आई एम लाइक, ओह शिट. लाइक या. बोलता है जैसे तू मेरे से बात कर रहा है ना वैसे ही बात करना. इतना जोर क्यों दे रहा है? देन ही टोल्ड मी आल्सो, थिएटर कर रहे थे. बोला हाँ सर, दैट्स डिफरेंट. यू आर ऑन सेट नाउ, डोंट थ्रो योर वॉइस. देयर इज अ माइक, आई कैन हियर यू ऑन द हेडफोन्स. टॉक हाउ यू आर टॉकिंग टू मी. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि अच्छा, just say it normally. सर आपने जब अब कह दिया है तो अब मैं ठीक से बोलता हूँ. That was my first experience where जब मेरे को किसी ने बोला कि यार नॉर्मली बात कर, say it normally. And then I think requirement भी वो हो गई. धीरे धीरे after OTT came, less is more is what it became. No, it is there. जबकि स्क्रीन छोटे हो गए. पहले तो ये होता था कि if you take close like this, so the first thing the cinematographer used to say, यार पूरे स्क्रीन में कैसा लगेगा चेहरा? हाँ. वाइड रखो, जितना वाइड रखो. अब तो फोन में ही सब देखते हैं 80% ऑफ द ऑडियंस. सो बहुत ग्रामर बदल गई है. हाँ सर. सो बट यू आल्सो हैव वन स्किल व्हिच यू हिडन फ्रॉम अस, इज योर सेंस ऑफ म्यूजिक. तो क्या करते हो आप म्यूजिक में? सर मैं डीजे था. अच्छा. 2016-17. हाउ डू यू स्पेल डीजे? ओके. I was a DJ back in the day. क्योंकि where, in which city, which place? Here only. Which Bombay. Which club? I used to play at multiple clubs. I had two mentors. One was DJ Proof, who is Gully Gang's in-house DJ now. And there's another DJ called DJ Sa. He has won India's best hip-hop DJ by VH1 multiple times. Okay. Great guys, very experienced. मुझे बस ये realize हुआ कि यार मेरा म्यूजिक की तरफ inclination इतना ज्यादा है. And मैं डेली लाइफ में अपना मूड, अपना काम, कितना ज्यादा म्यूजिक gives me. I should do something now. Why don't I learn something? And I love hip-hop music. तो मैंने सोचा यार ये कोर्स करते हैं. Let's see if I can. So there's a proper course. Yeah. There was an institute right in front of my building. So it was a 3-month course. वो किया. And then I told Proof कि यार, what can I do now? Tell me. He's like, come play with me. You know, you play the opening set at clubs. Practice भी हो जाएगी. लोग कम होते हैं, तो अगर तूने मिस्टेक भी करी तो किसी को पता नहीं चलेगा. और मैं तो खड़ा ही हूँ पीछे, मैं सिखाता रहूंगा. और मेन सेट में प्ले कर दूंगा जब 200-500 लोग होते हैं. So I think I did that for good 2 years. There's a club in Bandra called Rasta. I played there. There used to be a club in Andheri called Anarchy. I played there. So multiple places happened. But this was happening with acting, by the way. Okay. So I thought maybe तो दिन में एक्टिंग, रात में डीजे. बैटमैन. फिर एक पॉइंट पे समझ आया कि ये नहीं हो रहा. ये नहीं हो सकता. Because we actors don't have Saturdays and Sundays. You can be called for an audition on a Sunday also. So if you're playing late night, you have to wake up and go for an audition. So slowly वो
छूट गया मुझसे. But did that help in Khalbali Records? Yes, sir, of course, because I knew all the rappers and artists who were in the show जो म्यूजिक दे रहे थे. हाँ. मैं उनको उस टाइम से सुनता आ रहा हूँ. हाँ. अब वो मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरे शो के लिए म्यूजिक दे रहे हैं, तो वो भी इतना इम्प्रेस थे कि यार इसको तो सबको 6 साल पहले वाला गाना पता है. सो आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम बिकॉज ऑफ दिस. और उन्होंने बहुत सारी अपनी स्टोरी शेयर की which helped me also as a character because I was playing a record label owner indie. तो वो अपने मैनेजर्स के साथ कैसे रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. So it helped me a lot. Okay. So मैंने सुना है कि सीरीज में करीब 40 गानों का प्रोविजन था, बट बजट कट होते होते थोड़ा कुछ हुआ. So yeah. And the songs are amazing. So any thoughts on that? Any comments on that? What's your favorite? I love the songs. The songs, I think 6 or 7 songs are done by Amit Trivedi sir, and the rest were given by Azadi Records. Yeah. Azadi Records being one of the biggest underground. अब तो underground नहीं रहा है sir, अब तो they've become big from Delhi. They have an office in Bandra now. So the owner is Mo Joshi. Yeah. I shadowed him for good 1.5 months because that's exactly what I was playing. Right. And very new label owner who has these artists, and he was so surprised to know कि मुझे तो already सब पता है because I've been listening to his artists for so long. So I think it was somehow manifested. या मैंने इतना हिप हॉप सुना अपनी जिंदगी में कि भगवान ने बोला ये ले शो ही कर ले और इनके साथ ही कर ले. बहुत it's a very good feeling because it just sometimes doesn't feel real कि यार ऐसा हुआ क्या exactly. There's a गाना फटाफट नाम, it's one of my favorite songs. Thamja is a very very nice song that Prabh has given, and Pyar Besharam. I think these 3 songs are my favorite. In fact, Lisa Mishra has sung the female version of Pyar Besharam. Very nicely done. So yeah, these 3 songs would be my favorite. But sir, 20 गाने मैं तो कोई भी उठा के सुन लूं, मुझे तो उतना ही प्यार है उनसे. And where can you listen to these songs? All platforms. Okay. All platforms, iTunes, Spotify, YouTube Music, it's there everywhere. Okay. Any reactions you got after the show? Anything you remember? Anything? माँ बाप का भरोसा वापस आया? Sir, I'm 29 years old. First time in 29 years, my dad told me that he's proud of me. Okay. And he loves me. Okay. और ये दोनों एक ही सेंटेंस में बोला था, तो मैं तो थोड़ा घबरा गया. मैं बोला बस करो यार. So he saw the show. I was not home. He doesn't like watching my stuff when I'm around. तो मैं बोला आप देखो, मैं दूसरे कमरे में बैठता हूँ या तो मैं चला जाता हूँ. So he binged the entire show. He came to my room and he told me that अगर इसके बाद तुझे काम ना मिले तो I'll think as if the world is missing out on something. You're not missing out on anything. You've done a great job. I love you and I'm proud of you. And it's, I'm a grown man, so coming from a North Indian father, it's a little. तो 29 years के बाद उन्होंने ये बोला, ये अच्छी बात है कि 28 years तक नहीं बोला, ये गलत बात है? फादर है सर, वो कैसे बोलेंगे? मैंने कुछ कर भी दिया होगा तो कैसे बोलेंगे सर? बहुत डिफिकल्ट होता है फादर्स के लिए बोलना. बोल दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आई एम श्योर ही फेल्ट इट अदरवाइज, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू से इट. No, I guess it happens. It happens, and I think you are very good. So, any things, your director's process, anything you'd like to comment on that? Devanshu? Yes. Or any. मतलब कि कैसे? What is that interesting thing you learned from them? This show definitely opened a very new door for me in terms of the music industry. Usually हम गाने सुनते हैं, मजे लेते हैं, and we're done. But what happens behind it is something I learned from Prabh, learned from Emmer. These guys who were there, they actually accepted the fact कि नहीं भाई ऐसा होता है. You can get stuck in a contract. You can get stuck with a label. You can be the rights, the money can be snatched away from you because you've signed a piece of paper. तो ये होता है और ये बहुत मुश्किल होता है. एक और चीज जो मैंने अब उनसे रियलाइज की जहाँ फंस जाते हैं ये इज द ट्रेंडिंग जमाना दैट इज गोइंग ऑन. सो वेयर दे वांट टू मेक म्यूजिक दैट दे लाइक, दे लव, जो उनके सोल से निकल रहा है, बट लेबल इज लाइक भाई ये ट्रेंड नहीं कर रहा, दिस इज नॉट ट्रेंडिंग, नीड टू मेक समथिंग ट्रेंडिंग. दैट फाइट, दैट इंटरनल फाइट इन देयर माइंड कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर. आई नेवर वांटेड टू मेक ट्रेंडिंग म्यूजिक. आई वांटेड टू मेक म्यूजिक दैट आई थॉट इज गुड. These are a couple of things that I was unaware of, I think, which I learned. And Devanshu, obviously being the beautiful orator you are, Mr. Devanshu Singh, वो एक scene को आप 2 दिन
तक बात कर सकते हो उसके बारे में, बड़े ही मतलब बहुत, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, वेरी टू मच इमोशंस. Okay. And I love spending time with him because he just didn't talk to me about my character. He spoke to me about तुम्हारा बाप के साथ कैसा रिश्ता है, तुम्हारा बहन के साथ कैसा रिश्ता है, तुम्हारा एक कल के नए आर्टिस्ट जो तुमने साइन किया इसके साथ कैसा रिश्ता है. तो एक एक दो दिन तो हम एक एक कैरेक्टर के बारे में बात करते रहते थे. So I realized how important it is to not just know your character, but your relationship with even a character who might share a screen with for like a minute. तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा. सेट पे टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने, लाइन में बोलनी नहीं, you have to emote. So that these are I think 2-3 things that really I got from the थिएटर में क्या सीखा? थिएटर में लीनियर नरेशन नहीं है, वे गोइंग बैक एंड फोर्थ. थिएटर में क्या सीखा? थिएटर में सर मैंने चीखने चिल्लाने के अलावा मैंने ये सीखा कि डर निकल गया सर. जो थोड़ा सा हो सकता है डर, वो निकल गया कि एक लाइव ऑडियंस बैठी है, वो तुम्हारे ऐसे देख रहे हैं तुम्हें, चाहे, और ऐसा भी नहीं है कि अगर स्टेज पे और 5 लोग हैं तो हो सकता है उस पूरे थिएटर में से 10 लोग अभी भी तुम्हें देख रहे हैं, चाहे सीन कहीं और चल रहा है. बच्चा टू डू लॉट ऑफ किड्स प्लेस, अलादीन वगैरह, तो बच्चे तो स्टेज पे आ जाते थे. यू स्टिल हैव टू कीप गोइंग, कांट स्टॉप. एंड डिसिप्लिन एंड नो रीटेक्स इज व्हाट जब मैं सेट पे गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो मिल रहा है, वहां नहीं मिलता था. So you appreciate it more. Yeah. Okay. I'm not going to take this for granted. I'm still going to work as hard. And that I realized, I'm like, my God, theater made me really like this thing. No retakes. Come on. पर्दे खुल गए, शो शुरू हो गया, तुम्हारा प्रॉप तुम्हारे मुंह के सामने है चाहे नहीं है. जब तुम्हारी लाइन की बारी आ गई तो तुम्हें स्टेज पे जाना ही, you have to do something. If you don't have that prop in your hand, you have to do something and you have to make sure the show goes on. नहीं, बहुत important है. Any advice or suggestion you'd like to give to people who want to come into this industry as an actor or anything? आपकी गलतियों से कुछ सीखे? अच्छे दोस्त बहुत जरूरी है. It's very important to keep good people around you, especially when you're in this industry. It is very, very important to have the right people, not necessarily from the industry. 370 का audition था जिस दिन, उस दिन ईद थी. And that was probably one of the worst days of that year, 2023. I think I was having the worst day, emotionally, mentally. I was just, मतलब बहुत खराब दिन था मेरे लिए. कुछ करने का मन नहीं था, मैं लेट उठा था, बट ऑडिशन लाइंड अप था. और ऑडिशन लाइंड अप दोपहर का था और मेरे दोस्त के घर पे ईद लंच था. So I called, and he stays very close by. And he's a old school friend of mine. मेरे बचपन का दोस्त है. तो मैंने उसको बोला, यार लुकमान, you know what, I don't want to go for this audition. I think 100 में से एक छूट भी जाएगा तो मैं बोला यार I'll reschedule it. I'll go after the lunch. I think I just want to spend some time with you guys. I'll have lunch. And he's like, what time is the audition? I'm like 12. मेरा lunch कितना है? मैं बोला 12:30 का ही lunch रखा है. मैं बोला यार मैं जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, आप तुम लोगों के साथ खा नहीं पाऊंगा. And he's like, you're not coming without giving the audition. Go give your audition. I'll push the entire lunch for an hour. I'll keep a dinner not. खाना घर पे ही है ना, खाना कहीं नहीं भाग रहा. हम डिनर कर लेंगे. Even if your audition takes 2 hours, just go and give the damn audition and come. I think had he not pushed me, and he's like, what's wrong with you? I'm like, I'm just not feeling good. I'm having a bad day. He's like, it's absolutely fine. Don't even think about the lunch and spending time with us. You are going to spend the entire day with us. आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता होगा. सर एक्चुअली आप सही है, उसने खा लिया था. उसने बिरयानी खा ली थी. नहीं सर, he was very sweet. They all waited for me. So friends is important. I think it's very important to have good people around you. It can, और माँ बाप बचपन से ही ये सिखाते हैं जो हमें बोरिंग एडवाइस लगती है. It is also because it's a very mentally taxing job. Yeah. If you have support around you, it really matters. And if you try to make friends at that time, तो भरोसा हो ना, it takes time to build that trust, I guess. अच्छे दोस्त होना and एक अच्छा इंसान होना, ये 2 बेसिक चीजें अगर आप अपने साथ रख सको, irrespective of how much ever work you've done or not done, treat the people around you right, have good friends, and be very, very, very honest towards your work. Just these basic things. I know they sound very boring. बहुत घिसी पिटी बातें लगती हैं ये, बट मैंने गलतियां करके सीखा
इंडस्ट्री में भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में सोच के आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दे आर गॉड सेंट. रैंडम पीपल दैट आई मेट जिन्होंने मुझे 10-12 कास्टिंग वालों के नंबर दे दिए व्हेन आई डिडंट नो व्हाट इज कास्टिंग. एंड वन ऑफ दीज गाइज वाज आदर्श गौरव. Okay. And that's why I love him so much. He's still there in my life. I still go to him when I need advice. He still comes to me when we need to talk. He just gave me 5-6 numbers. बोल देना आदर्श का दोस्त है. They'll call you for an audition. Wow. Who does that? Who does that? Adarsh Gaurav, Rohan Khurana, Chandrachud Rai. Rohan, I'm still in touch with. Adarsh is a dear friend of mine. Chandrachud Rai, I'm not in touch with, but every time I get a chance, I mention their name. So good people, honesty in your work, and treat the people around you right. That's basic. I think if you keep these things intact. वो जाकिर खान ने बोला था ना अभी कि काम 19-20 चलेगा, इंसान 21 चाहिए. इंसान 21 चाहिए. तो ये बात सही है. So that turned out to be very true in my journey so far. So I'm going to ask you some rapid fire questions. Okay. But before I do that, I'll just answer one of the rapid fire. Ki one actor with less talent but great attitude vis-a-vis one actor with great talent but a little lesser attitude. I'll choose the less talent wala. 100%. So 100%. because attitude is everything, and that talent जो है वो craft है, वो सीख लिया जा सकता है, पर attitude तो तुम्हारा है. इंसान अच्छा चाहिए. हाँ. मैं I'll cope up. मैं कर लूंगा कुछ. We'll work hard together. But I need a good human. So let me start the rapid fire questions, and it doesn't need to be one word, but if possible, नहीं तो कोई बात नहीं, we can elaborate. Absolutely. So screen time, which is a massive screen time in a script, or a definitive 5-minute role? Right now, a definitive 5-minute role. But why is it so? Because I think if I leave a mark, I'll eventually get a big screen time. That's more important. Cool. पता चला बड़ी screen time में स्वाहा हो गया, तो फिर उसके बाद 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे. So what do you believe in, love or lust? Love, of course. गलत आंसर. नहीं एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ. So बंद करो ये podcast. So third question, looks or money? Sir, but I have to choose this another person. नहीं बस I'm just saying looks. In general. हाँ. मेरे लिए तो सर मनी है, लुक्स है अपने पास, थोड़ी बहुत भगवान ने दे दी है. That was the right answer. So acting as a profession or making money through other mediums, which is 10 times more than acting, what will you choose? No sir, acting. I'm comfortable. I've seen no money in my life, and I've seen money also. So okay. I think I'd rather. Fair enough. So what do you want to become, a star or an actor? A star. Star? ठीक है. How do you become a star without being a bad actor? Can I give you names? Oh God, I touched a nerve. Okay. So next question: being honest or being a great marketing example? No. Being honest. Marketing works only till a point, then people know what you're doing. ठीक है. प्यार या role in a movie? What is your preference? अगर एक ही choice है तो. So you're asking someone who's been single for 10 years now. So it's बहुत difficult question है. But I'll take a role in a movie right now. ठीक है लड़कियां, ये प्लीज पॉडकास्ट ना देखें. तो और अगर किसी में अच्छा विलन का रोल है पर खराब हीरो का रोल है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर चॉइस, हीरो और अच्छा विलन? मैं तो हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कोई अच्छे विलन का रोल दे दे. हाँ, आपकी शक्ल भी विलन वाली है. थोड़ी इसलिए तो मिल नहीं रहा. So a bad script with great co-actors or great script with bad co-actors? A bad script with great co-actors. Oh God. किसने लिखे हैं क्वेश्चंस? हाँ यार, who's written them? It's धर्म संकट है ये तो. नहीं लिखे. I think a good script with bad actors. Yeah, because then I'll outshine them, na? Okay. And I'll get more work. Yeah. Cool. So indie film or blockbuster money making film? Blockbuster. Cool. So ये बहुत confusion रहता है लोगों का. Would you rather do a romantic scene with a stranger or fight scene with a friend? Romantic scene with a stranger. Okay. And if the stranger happens to be the same sex, that's fine with you?
I mean, आपने जवाब दे दिया. ये follow up question नहीं पूछा पहले. So being famous as a star or being respected as an actor? Being respected as an actor, for sure. Okay. Reality show or scripted drama? Sir, ये इसका difference क्या है? रियलिटी शो इम्प्रोवाइज Reality, नहीं होता, हाँ. चीजें होता है. स्क्रिप्टेड होता है पूरा. मतलब बिग बॉस और अनुपमा और हाँ. सो रियलिटी शो में तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है. यू हैव टू हाँ. जस्ट गो. नहीं सर, आई थिंक आई हैव टू डू अ स्क्रिप्टेड ड्रामा. रियलिटी के लिए आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन. वो निकाल देंगे मुझे 2 दिन बाद. उसको घर भेजो. So, would you like to work with a difficult director and if you don't have a choice, or an unprofessional actor? Which is going to be the choice? No, I am okay to work with an unprofessional actor. I need a great director. Yeah. That'll decide a lot of things for me. Cool. And अगर किसी कैरेक्टर में आपको बोला कि आपको पूरा बाल करने पड़ेंगे, वेट गेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, the role is good. Yeah. Will you do it? Yeah, of course. Okay. Yeah. I mean, I usually look for these things. Okay. जब खलबली और 370 में मेरे को कभी-कभी बस ये लग रहा था कि यार मेरा लुक थोड़ा एक जैसा हो गया. I wanted people to see me in a different look altogether. But hopefully soon. I have no problem as long as the character is great. If it's something that people might remember. 100%. Cool. So that's about it. इससे ज्यादा हम आपको झेल नहीं पाएंगे. इतना झेल लिया सर. पूरा दिन आपने पता नहीं कितनी बार ये किया है. So fair enough. You're tired, I can see. No, I'm not tired. That's it. Anything you'd like to say to your audience? If you still haven't watched Khalbali Records on Jio Cinema Premium, please go ahead and watch it. ताली गाली जो दोगे ले लेंगे. And as long as आप देखो, and please let us know how you like it. And please keep following sir. This has been one of the better conversations that I've had in the last 10 days. And thank you so much for having me. And अगर खलबली रिकॉर्ड्स पे आपको कुछ भी अच्छा लगा और आप स्कंद को मैसेज देना चाहें तो हिटफ्लिक पे आइए और मैसेज दीजिए and we'll make sure that he replies to them. 100%. I'll do that. Thank you so much. Thank you.